Namaskar dosto, good evening friends. I am Dr. Sanjay Kalra, your friendly and now familiar endocrinologist. And you are watching Dr. KK's Med Talks, Thursdays with Dr. Sanjay Kalra. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 746वां 746th एपिसोड है. Let's have the headlines for the day. Now, your lifestyle does matter because a new study has shown that women who are susceptible to diabetes can actually reduce their risk of developing this disease if they follow a healthy lifestyle. तो यदि आप अपना लाइफस्टाइल, अपनी दिनचर्या को सात्विक, हेल्दी बनाएं, तो एक्चुअली आप डायबिटीज का जो रिस्क है उसे कम कर सकते हैं. A study has shown that most patients with long COVID recover within a year. तो यदि एक साल हो गया है कोविड हुए को और आपको लग रहा था कि सिम्टम्स हैं, so I mean you should be fine now. Just forget them. And in case you really have those symptoms, then we need to go to the doctor and find out there will be another reason. You can't blame COVID-19 now after 1 year. Other diseases are also increasing, and Canada में monkeypox बढ़ गया है. 1,379 cases of monkeypox in Canada. In India, we have 8 so far. Dengue fever is spreading its wings, its tentacles. तो dengue fever भी बहुत फैला हुआ है कंट्री में, बहुत जिलों में. In Ahmedabad, 26% of dengue patients are below the age of 14. तो बच्चों का ख्याल रखें. Make sure that children wear full sleeve shirts and trousers at least. And one very good thing that has happened, a study on more than 1,600 women suggests a very simple intervention to increase breast cancer cure. And this multi-centric study from India showed that a low-cost, simple intervention, all you need to do is to inject a local anesthetic around the tumor on the operating theater before surgery. वो सिंपल सा एनेस्थीसिया देके, लोकल एनेस्थीसिया देके आप ब्रेस्ट कैंसर का क्योर बढ़ा सकते हैं. So thanks to all our colleagues in oncology and surgical oncology for doing this for us. इस good news के साथ let's move on to our topic for today. फिर से भारी भरकम टॉपिक, heavy weight topic. We'll talk about myths and facts of obesity. And let's see who our expert is. Warm welcome, Dr. Ganesh HK. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Dr. Ganesh is a consultant endocrinologist at Endodive Clinic in Bangalore. Keen research interest, very good at clinical practice, the go-to person if you have a difficult case in endocrinology. हमारे सब्जेक्ट में आपको इलाज नहीं करना आ रहा, विमेन्स हेल्थ की कोई दिक्कत है, then the person to telephone is Dr. Ganesh. ये मैंगलोर में रहते हैं एंड इनका जो काम है क्लिनिकल प्रैक्टिस का तो है ही है, बट साथ में जर्नल्स में लिखते हैं, लेक्चर्स देते हैं, मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं. And he won the A.R. Seth Award for Best Research Paper from the Endocrine Society of India. Apart from training in endocrinology, he has also been trained in diabetes foot care and in radio immunoassay, and एक scope certificate भी है डॉक्टर साहब के पास. So, Dr. Ganesh, warm welcome. Lots of people logged in today. Yes, we sir. have people from all walks of life. So many doctors, Dr. Sanjeev Puri from Punjab, many healthcare advocates, Swapna Jain ji from Vellore, Aruna Tyagi ji, Dr. Pawar is a pediatrician, Alankrit Sinha saying good evening to you. And Good evening, Asma sir. Batata वाला एक बड़ा मुश्किल सवाल पूछ रही है, so we begin with that. केदार जोशी जी भी आपको नमस्कार कर रहे हैं. Dr. Ganesh, what is scope certification? So would you like to tell us about obesity first of all? Who treats obesity? Whose responsibility is it? इनफैक्ट सर ओबिसिटी सबको ओबिसिटी का इलाज करना चाहिए, बट एज सच ओबिसिटी का देखभाल तो सबको करना चाहिए. लेकिन सम डॉक्टर्स आर वेल ट्रेन्ड इन ट्रीटिंग ओबिसिटी, लाइक जो उसके बारे में जो कैसे ओबिसिटी यूजुअली होता है और क्या रीज़न है, किस वजह से हो सकता है, ये सब अंडरस्टैंड करने से इलाज करना आसान हो जाता है. So I think if we know how usually obesity develops, but in fact, even after treating obesity, even now I am not very sure why only few people develop obesity and some people do not. There are so many still we are not having answers to many questions. Still, Yeah. so since we have some kind of expertise, endocrinologists are good in treating obesity, and bariatric surgeons are also well versed in the management of obesity, sir. ओबिसिटी यूजुअली दो टाइप का हो सकता है. जनरलाइज्ड ओबिसिटी हो सकता है और सेंट्रल ओबिसिटी, जो दिखने में ओबिस नहीं दिखते, लेकिन जो अब्डोमेन के रीजन में, स्टमक के रीजन में जो वजन भारी है, तो उनका जो वेट स्टीप रेशियो बोल के हम एक्चुअली वी कैन डिसाइड,
सो अगर वेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा है हिप से, तो हम बोल सकते हैं कि उनका वो सेंट्रली ओबेस है। तो एक मापन है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स से भी ओबिसिटी है क्या देख सकते हैं। सो बॉडी मास इंडेक्स, उसके लिए वेट और हाइट का जरूरत है। वेट इन केजी और हाइट मीटर में जो लेके उसका एक वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट लेके सो बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें बीएमआई में इंडियंस एक्चुअली जो थोड़ा हमारा हार्ट का प्रॉब्लम आने का चांस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए तो थोड़ा अगर बीएमआई थोड़ा कम है तो भी हमें ओबीस है माना जाता है। तो बीएमआई मोर देन 25 अकॉर्डिंग टू मेनी इज कंसिडर्ड एज ओबेसिटी इन इंडिया, सर। So lots of other people also logging in, Dr. Ganesh. यस Good सर। evening and hello to you from Samiksha Chaudhary, from Anamika Anuji. गुड Chandrasekhar इवनिंग सर। Harinarayan has a question. We'll come to that. And यस। welcome to you from Dr. Mursalil Nasser, Dr. Pradeep Rawal, Sachin Khodade Sahab, and also Sayyid Bukhari Sahab. And ये उम्र बड़ी लंबी होगी because just before the program started, we were speaking about Dr. Mohan T. Shenoy, who has the world record for being the only person to help me in my obesity. So he has also logged in. Welcome, Dr. ओके। Mohan. And गुड thank you for इवनिंग। your गुड interventions. इवनिंग। So डॉक्टर गणेश, आपने बड़ी सारी बातें की. लेट अस डू देम वन बाय वन. एक तो आपने कहा कि ओबेसिटी दो तरह की होती है. ओबेसिटी इज ऑफ टू टाइप्स, जनरलाइज्ड एंड सेंट्रल. सेंट्रल ओबेसिटी, एंड आपने एक माप दिया, दैट इज बॉडी मास इंडेक्स. सेंट्रल ओबेसिटी में इट इज पॉसिबल कि बीएमआई ना हो ज्यादा, बट फिर भी पेशेंट इज एडिपोस. सो डॉक्टर गणेश, वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट दीज वर्ड्स, ओबेसिटी वर्सेस एडिपोसिटी, and यस what सर। does the word hidden obesity mean to you in this context? यस सर। ओबिसिटी मतलब जो भी जिनका भी वजन ज्यादा है उनको यूजुअली हम ओबिसिटी बोलते हैं। तो हिडन ओबिसिटी मतलब दिखने में ओबिस नहीं दिखते, लेकिन उनका एडिपोज टिश्यू मास जो है, फैट मास जो है वो ज्यादा है। तो वो जहाँ ज्यादा नहीं होना चाहिए उधर ज्यादा है। मतलब अपना जो ओमेंटल टिश्यू है, पेट के अंदर जो है ओमेंटम है और या मेसेंट्री है, मतलब जो भी जहाँ फैट यूजुअली ज्यादा नहीं होना मांगता है, तो बहुत कम प्रमाण में उधर फैट होना चाहिए। क्योंकि उधर का फैट जो है वो इमीडिएटली जो फैटी एसिड्स जो है और जो भी फ्री रेडिकल्स है उधर से सडनली वो ब्लड स्ट्रीम को आ जाता है, खून को आ जाता है। इसलिए उधर अगर पेट के अंदर जो फैट है वो बहुत डेंजरस होता है। अपना जनरलाइज ओबिसिटी, अगर आपका थाइस में फैट ज्यादा है या तो हाथ में ज्यादा है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो पेट के अंदर जो है हिडन ओबिसिटी या विसरल ओबिसिटी या सेंट्रल ओबिसिटी जो है वो बहुत डेंजरस होता है। तो अगर स्टडीज में ये वो क्लियर कट बताया गया है कि अगर विसरल ओबिसिटी है या पेट के अंदर जो पॉट बेली जो बोलते हैं या पैंट का साइज ज्यादा होता जाता है, तो वो डेंजरस है, क्योंकि वो हार्ट का प्रॉब्लम के लिए, हार्ट अटैक के लिए उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। So, general obesity, so all of us will be able to make out. You see the patient, and if you want to calculate, you will do the body mass index, जैसे डॉक्टर यस साहब ने सर। कहा. यस सर। But sometimes this BMI may be normal, and still you will have more adiposity, more fat. वो fat गलत जगह पे है. एक क्वेश्चन जो मिस्टर चंद्रशेखर पूछ रहे हैं, can obesity shorten life expectancy? Why are we talking about obesity in the first place? यस सर, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो क्योंकि ओबिसिटी से बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है एज सच। जो हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टडीज़ में ये दिखाया है कि अगर आप ओबेस हैं, छोटे उम्र से ओबेस हैं, तो ये 1 डिकेड मतलब 10 साल तक उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाता है। तो वेरियस रीजंस आर देयर फॉर दैट। वन इज इंक्रीज इन कार्डियोवास्कुलर डिसीज, बाकी चांस ऑफ डायबिटीज इज मोर, चांस ऑफ डिस्लिपिडीमिया इज मोर, हार्ट कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होने की चांस ज्यादा है, और इवन कैंसर्स आर मोर कॉमन इन ओबीस पीपल कंपेयर टू लीन पीपल। तो ये सारे रीजन से अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी ओबीस पीपल में कम होता है। सो जो चंद्रशेखर जी का क्वेश्चन था, कैन ओबेसिटी आंसर लाइफ शॉर्टन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, डॉक्टर साहब उसका आंसर दे रहे हैं, इट कैन शॉर्टन बाय अप टू 1 decade और 10 years, बट दैट इज यू डोंट कंट्रोल द ओबेसिटी. And then Dr. Saab has alluded to the various complications that can occur with obesity. Let us try to remember them. Simple shabdon mein, simple lafzon mein. M for metabolic, like high glucose, high cholesterol, high blood pressure. M for metabolic. M for musculoskeletal. Dr. Ganesh, what would this mean to you? Musculoskeletal complications of obesity.
यस सर। सो मेन प्रॉब्लम जो है ओबीस पीपल में जो होता है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द अपना घुटने का जो है जोड़ जॉइंट है, नीचे। तो उस नी जॉइंट जो है, तो वो उसमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वजन बहुत सालों से अगर ज्यादा है तो नी जॉइंट को प्रेशर ज्यादा होता है, उसकी वजह से जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ता जाता है। तो उसकी वजह से इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू वॉक आफ्टर सम टाइम। So after the age of 50, 55, so if people with obesity, it becomes very difficult for them to even walk. So that becomes even more problematic, because that will further lead to weight gain, because उनका चलना कम हो जाता है, इसलिए फर्दर वेट गेन होता जाता है। इसके अलावा मसल्स का भी ये जो ओबिसिटी के साथ सार्कोपिनिया भी हो जाता है, मसल्स का आम प्रमाण जो है वो कम होता है। तो एक्सरसाइज कम होने की वजह से मसल्स का कैपेसिटी भी कम हो जाता है, तो इसकी वजह से और जो मायोपैथी, जो प्रॉक्सिमल मायोपैथी भी हो सकता है, नीचे बैठने से उठना मुश्किल होता है, इवन डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज के भी लिए भी तकलीफ होता है। तो बाकी जॉइंट्स को भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इवन वर्टेब्रल कॉलम उसको भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। मेनली जो लोअर बॉडी पार्ट, मतलब अपना हिप जॉइंट और नी जॉइंट बहुत सफर करता है ओबिसिटी से। I also realized आपने vertebral column की बात की डॉक्टर गणेश, so I realized in my practice we were using these M's, M for metabolic, M for musculoskeletal, but another M is myelopathy. So you will find that compressive myelopathy is also more common in obese people. एब्सोल्युटली सर। बाकी हाँ, एम्स की तरफ चलते हैं, और एक एम है मेकअप। मेकअप मतलब स्किन या त्वचा की सेहत। एंड सरोज जायसवाल जी मैडम इज रेजिंग अ पॉइंट, शी सेज, सर माय ग्रैंडसन इज ओबीज, he has got dark complexion around his neck. What is this? How can we help my grandson? यस सर, इसमें ये इसको हम इंग्लिश में एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस बोलते हैं। ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक फीचर है। मतलब अपन जब वेट ज़्यादा हो जाता है, एडिपोज टिश्यू ज़्यादा हो जाता है, अपना शरीर में जो इंसुलिन है उसको बराबर एक्शन करना नहीं होता है, इसकी वजह से इंसुलिन लेवल भी ज़्यादा होता जाता है, और ये जो स्किन पिगमेंटेशन चालू होता है। सो द इनिशियल स्टेजेस में वो नेक या गले में दिखता है। सो आफ्टर सम टाइम, सो द उसमें भी ग्रेडिंग है, ग्रेड 1 टू ग्रेड 4। अगर पूरा नेक सराउंडिंग हो गया तो ग्रेड 4 बोलते हैं। तो फिर बाद में एक्सिला में आना चालू होता है, और फिर बाद में जो भी फोल्ड्स आता है, स्किन फोल्ड्स, उधर वो पिगमेंटेशन चालू होता है। जैसे ब्रेस्ट के नीचे हो, या तो इंग्वाइनल रीजन, मतलब जो टांकों के बीच है, बीच में, ऐसे उधर भी हो सकता है। तो उसमें ये होने से प्रॉब्लम है कि ये आगे जाके ऐसे पिगमेंटेशन ज्यादा है तो आगे डायबिटीज आने का चांस ज्यादा रहता है। तो अभी उनको वेट कम करने का पूरा मेजर्स लेना चाहिए, otherwise they can develop diabetes in the future, and even other metabolic problems like hypertension, dyslipidemia, everything can develop. तो दिस इज एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस मैडम, एंड द ट्रीटमेंट इज वेट लॉस। बेटे को ऐसे समझाएंगे पोते को कि वी हैव कॉट यू अर्ली बिफोर यू हैव डेवलप्ड द मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस, सो इट्स गुड टाइम, वी हैव अ विंडो अपॉर्चुनिटी, एंड लेट अस फोकस ऑन डाइट एंड एक्सरसाइज। एंड बेटे की एज पे डिपेंड करता है, इफ ही इज अबव 18 वी आल्सो हैव ड्रग्स फॉर हिम इफ ही रिक्वायर्स। So, Dr. Saab, M was metabolic, M was musculoskeletal and myelopathy, M was mood, M was makeup as well. We have with us Dr. R.S. Chaudhary, sir. Sir is senior surgeon from Karnal. And we have a question from Asma Batatawala. तो ये पूछते हैं, two more M's. M for maternity and menstruation. Because Asma ji कहती हैं, polycystic ovary syndrome, I am not losing weight. Should I take keto diet? So what is that impact on maternity and menstruation from obesity? यस सर, तो ओबेसिटी से ऐसा जो आसमा जी ने बोल रहे हैं, जैसे वो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, पीसीओएस जो बोलते हैं, वो होने का चांस ज्यादा रहता है ओबेसिटी में। उसमें क्या होता है, ओवरी से, अंडाशय से अंडा बराबर से निकल नहीं पाता है, इसकी वजह से ओव्यूलेशन प्रॉब्लम होता है, और मेंस्ट्रुएशन भी बराबर नहीं होता है, टाइम पे नहीं होता है, और जो भी होता है कभी कभार बहुत ज्यादा हो जाता है, 3 महीने में, 4 महीने में एक बार ऐसे। तो इसका वो एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर वजन कम कर दिया है, आप वजन कम कर दिए तो डेफिनेटली देयर विल बी इंप्रूवमेंट। वी नीड नॉट बिकम नॉर्मल वेट पीपल। सो इवन 5% to 10% ऑफ वेट लॉस, 5% ऑफ वेट लॉस आल्सो, देयर विल बी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। जो जिनका पीरियड्स बराबर नहीं होता है और प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करते रहते हैं, उनका 5% अगर वेट लॉस हो गया तो भी
पीरियड्स नॉर्मल होने का और प्रेग्नेंट होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है. तो इसलिए आई थिंक वी हैव टू counsel the people or patients properly that weight loss is a must and rather बाकी medications जो है वो help करेंगे, लेकिन basic treatment will be weight loss only in such people. So, Asma ji, keto diet may not be very good idea, but we'll talk about keto later on. Dr. Ganesh से details पूछते हैं. But even if you lose weight by 4 to 5%, even if you do that, PCOS में जो issues हैं, menstrual regularity and fertility, these will be taken care of. Dr. R.S. Chaudhary sir is saying now, Dr. Ganesh sir, you are discriminating against men. So, obesity has an impact on menstruation and women's fertility, women's health. What about masculinity? Both fertility and sexuality. यस सर, एक्चुअली ओबिसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है वो इवन मर्दों में भी फर्टिलिटी को अफेक्ट करता है. इवन एक्चुअली इट हैज शोन दैट द लिबिडो आल्सो विल बी रिड्यूस्ड इन पेशेंट्स विद मेटाबॉलिक सिंड्रोम एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कम होता है. और इवन द स्पर्म काउंट में भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम का बहुत असर रहता है. सो इफ दे लूज वेट इवन इन मेन, so there is significant improvement in fertility will be seen. Even the muscles become the capacity or strength of the muscles become less if they are more and more adipose. So I think the fertility में बहुत improvement होएगा अगर वो weight lose करेंगे तो sperm count और semen analysis का improvement भी बहुत दिखाई देता है अगर वजन कम हो गया तो. I think Ganesh, you also must be seeing this in your OPD. The commonest cause of low sperm count is obesity. Just Yes, sitting sir. at the desk, sitting in IT job or something, and Absolutely. that plays havoc actually with all the aspects of masculinity. Yes, sir. Dr. Kshitij Kumar has joined us, and so has Vinny Joglekar ji. So now everybody can ask difficult questions because Vinny ji is a nutritionist from Bangalore. So all the difficult questions we'll pass to her only. Yes, sir. Yes, sir. And but एक मनीषा शर्मा जी हैज अ पॉइंट, वील कम टू दैट. विनय गुप्ता जी का भी जायज पॉइंट है पहलवान्स पे, बट वील जस्ट कंप्लीट दिस लिस्ट ऑफ एम्स. तो 3 और एम लेते हैं डॉक्टर गणेश. Yes, You had sir. spoken about M for malignancy. So any cancers which are more common in obese men and women? Yes, sir. Yeah, even colon malignancies are more common in men, and breast malignancies are also more common in women with obesity, and even other malignancies like I think even Uterus. lung malignancies are also more common in men with obesity, sir. Uh, and not in malignancy, but you can use the word mitogenic. Gallstones भी ज्यादा common होते हैं. अब मजेदार बात है कि that gallstones are more common in obese people, and they are also more common in people who go for sudden weight loss programs. तो जब आप weight loss बहुत तेजी से करते हैं with keto diet or with very low calorie diet, even with some of the injections, that also can precipitate gallstone formation, क्योंकि जो पित्त की थैली है, जो बाइल रखने की जगह है, that is the gall bladder, वहां पे बाइल बहुत concentrate हो जाता है, तो वो पथरियां बन सकती हैं. 2 more M's we'll take, sir. M for mood and M for monetary, and that completes our list of not so nice things about obesity. So mood and monetary impact in your clinic, sir. Yes, sir. Sir, mood में obesity actually produces lot of depression, feelings of depression in people with obesity. The main reason is the body image. They perceive that they are not good looking or they are obese. वो बहुत impact करता है. And the worst part is they try to lose weight and they try to lose weight for about 5 to 10 days or 15 days. Then वो बिल्कुल खाना छोड़ देते हैं और उसके बाद 15 दिन बाद वो craving चालू होता है. Then that becomes a vicious cycle, like so then they will put on more weight and that produces the feeling of depression. So depression actually बहुत common है जो obese patients में, or especially who are not happy with their obesity. So some people who are happy with their body image or who are not bothered, probably उनमें उतना depression नहीं दिखता है. लेकिन people who want to lose weight but who are not able to do so, they become more and more depressed. तो एक्चुअली मूड का प्रॉब्लम बहुत रहता है ओबेसिटी में. और इसमें एक और एक्चुअली कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में इसके लिए आए, हेल्थ चेकअप के लिए आते हैं, उनमें से 40% लोगों को अपना उनका खुद का बॉडी इमेज बहुत खराब दिखता है. मतलब वो सोचते हैं कि हमारा बॉडी इमेज बॉडी बराबर नहीं है, आइदर लो वेट और ओवर वेट. सो मेजॉरिटी ऑफ देम बीइंग ओवर वेट. So actually, if they are actually thinking that their body image is not correct,
then the chance of getting depressed is very high, sir. Yes. और फाइनेंशियल का तो है ही, तो बिकॉज ऑफ द ओबिसिटी पीपल स्पेशली if they are severely more obese, then they are not able to do their work properly. Because of that there will be financial loss, and because of obesity बाकी प्रॉब्लम जो है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस जो है, या तो डायबिटीज है, या तो जो भी प्रॉब्लम्स होता है, उससे there will be lot of expenditure they have to go through. So point well taken, and this point about self-esteem, body image, we'll come to that shortly. Vinay Gupta ji कह रहे हैं, you spoke about BMI. You also said that body mass index is okay in diagnosing generalized obesity, but it won't catch visceral obesity. तो गुप्ता साहब के दो क्वेश्चन है. जो पहलवान हैं, people who have heavy body weight, what is good about their health? What is that body weight coming from? Is it coming from fat, adipose tissue, from something else? So they actually their muscle, since they have very bulky muscles, the muscle weight will be good. So their, even though their BMI will be, BMI is more, but that is metabolically healthy obesity, what we can say. So the उनका obesity से जो problems जो होता है cardiovascular disease का, वो बहुत कम है. तो इसलिए I think उनमें अगर सेंट्रल ओबिसिटी है तो वो हमें देखभाल करना चाहिए, नहीं है तो अगर जनरलाइज बीएमआई को देखना नहीं चाहिए. And for central obesity, Vinay Gupta ji has two questions now coming up. First of all, what is visceral fat? Could you repeat again in English, please? And secondly, what are the actual modalities? What is the imaging with which you actually calculate the visceral fat? But supposing I don't have that test available with me, I don't have those imaging modalities. What is the simple measurement which I can do for all my patients using a measuring tape? Yes, sir. So I think, sir, that's a very, very valid and very basic question, actually, very important. तो उसमें central obesity जो बोलते हैं, there are fat, adipose tissue which is present within the abdomen. So near the omentum or mesentery, वो visceral fat कहा जाता है, और visceral obesity. It's not the subcutaneous fat which is present in the abdomen, and actually within the peritoneum or within the mesentery or omentum. So that is considered as visceral fat. And इसके measure करने के लिए बेस्ट है CT scan और DEXA scan. So they are the best tools to measure central obesity. But as sir is rightly mentioning, so many centers are not having this DEXA and QCT. So such case में we can use simple definitions like waist hip ratio. You have to assess the diameter in the waist region and hip region. The hip we know, the anterior superior iliac spine region. वेस्ट जो है, वेस्ट जो कहते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टडीज वेस्ट को लेता है लोअर मार्जिन ऑफ रिब से हिप के बीच में जो भी मिनिमम डायमीटर है उसको वेस्ट कहते हैं. सो वेस्ट और हिप रेशो ये जो है यूजुअली इट इज लेस देन 0.85 इन फीमेल्स एंड 0.95 इन मेल्स. तो उससे ज्यादा है तो ओबिसिटी कहते हैं, और वो भी मुश्किल है. तो सिंपलेस्ट विल बी जस्ट मेजर द वेस्ट सर्कम्फ्रेंस. अगर वेस्ट सर्कम्फ्रेंस जो है बिटवीन द पॉइंट बिटवीन द एंटीरियर जो हिप का रीजन है और लोअर मार्जिन ऑफ रिब्स उसके बीच में, तो जो भी है तो डायमीटर, तो वेस्ट सर्कम्फ्रेंस अगर 80 सेंटीमीटर से ज्यादा फीमेल्स में और 90 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर मेल्स में ज्यादा है तो हमें सेंट्रल ओबेसिटी कह सकते हैं. अगर वो भी मुश्किल है तो देन द सिंपलेस्ट थिंग विल बी टू आस्क व्हाट इज योर पैंट साइज. So that will tell us what is the waist circumference. So then we can make out who is central obese. And अगर पैंट का साइज भी नहीं पता, even your shirt size will be fine. So if it is 42, what actually that means is that your neck circumference is 42 centimeters, and anything above 42 मतलब visceral fat. एक explain करते हैं visceral का मतलब क्या है. तो जब हम English शब्द इस्तेमाल करते हैं viscera, VISCERA, इसका मतलब क्या होता है डॉक्टर गणेश? विसरा मतलब सर इनसाइड जो अब्डोमेन के जो अंदर जो रहते हैं ऑर्गन्स उसको विसरा कहते हैं. सो मतलब अपन ओपन अब्डोमेन ओपन करेंगे तो जो मिलता है वो विसरल ऑर्गन. तो जो विसरा हुए वो अंग हुए हमारे ऑर्गन्स या अंग हुए पेट के अंदर या कहीं पे भी हो सकते हैं बॉडी में. जैसे लिवर एक विसरा है, ओवरीज एक विसरा है, स्प्लीन एक विसरा है. तो ये जो फैट जो है जब ये एक परत या एक लेयर बना देता है हमारे विसरा के आसपास, लिवर के अंदर बना सकता है. पॉलिसिस्टिक ओवरी को समझने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड, यू कैन थिंक कि ओवरी के अंदर या ओवरी के आसपास फैट घुस गया. हार्ट में भी फैट हो सकता है, पैंक्रियास में भी, गले में भी हो सकता है. कई बार इससे
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है। आपको अगर रात को खराटे आते हो, दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ विसरल फैट, इफ यू आर स्नोरिंग टू मच एट नाइट। तो जब ये हमारे अंगों के आसपास और अंगों के बीच में फैट घुस जाता है, जैसे अब जो सोमो रेसलर या पहलवान होंगे उनकी मसल में मसल होगा, पर अगर कोई हाइपोथायराइड पेशेंट है उसकी मसल के अंदर फैट की लाइनिंग घुस जाएगी, तो दैट इज विसरल फैट एंड दैट इज व्हाई इट इज डेंजरस, क्योंकि ये अंगों को एक्ट करने से भी रोकता है। Dr. Raju has a case to share with you, so he is just asking how common is it. Dr. Saab, after COVID, I lost a lot of weight, uh, but then I developed central obesity with the same diet, and now my weight gain is continuing with a vengeance after COVID. So, what can it be? What do I do about muscle health? Any tips for me? Yeah, sir. Actually, probably it is common because of the during COVID, many people have lost weight during the illness, but after that they have gained. One reason might be the working from home or the less of exercise. जो one more important thing, जो exercise हम जो regularly routinely कहते हैं, so half an hour walking, brisk walking, वो ठीक है, वो that is very important. But in addition to that, the one most important thing is the fidgeting, what we call it as fidgeting. Every 5 minutes or every minute, what we do, we just simply sit. That will be very very bad. Rather than that, every 5 minutes or 10 minutes में इधर उधर चलते रहते हैं, so then the chance of getting obesity is very less. But because of the work from home, sitting in constantly in front of the computer, so a lot of people have gained weight. So that is one of the reason post COVID many people have gained weight. So शायद now actually even the associations like ADA, they clearly tell that after 30 minutes of continuous sitting, we have to take a break of at least 5 minutes. So 30 मिनट के बाद 5 मिनट का एक ब्रेक लेना ही चाहिए, तो 5 मिनट इधर उधर चल के आने का है. So with that also we can lose a good amount, not good amount, some amount of weight. And it's 27 minutes now into our program. So let's ask everybody, if you're happy and you know it, what will you do? So if you're happy with KK Med Talks, Dr. Ganesh, what will you do? If you're happy and you know it, clap your hands. So let's all do that. Sir. It's part of fidgeting. Yeah. And we'll clap for Dr. Ganesh as well. Thank you, sir. डॉक्टर गणेश, आपको ना एक रिकॉर्ड, वो एक इनाम मिलना चाहिए. यू शुड गेट अ प्राइज फॉर द बेस्ट स्माइल इन द एंटायर कंट्री. तो स्माइल का राज तो बताओ. Sir. Dr. Kshitij had asked about childhood obesity specifically. So, of course, all the M's that we spoke about, they will be operative in childhood obesity or in adolescent obesity. But other things regarding orthopedic disorders, regarding vitamin D, regarding puberty, what happens in childhood obesity? Yes, sir. Actually, childhood obesity is actually really alarming because now the prevalence of childhood obesity is increasing very much in across the globe. Even in India, it's increasing alarmingly. क्योंकि द रीजन तो सिंपल है. तो अपना जो हमारे टाइम पे जो 20-30 साल से पहले जो भी जब भी स्कूल जाते थे बच्चे, तो देयर वाज इनफ टाइम टू प्ले एंड प्ले ग्राउंड्स वर देयर. Now playgrounds are not there and everything. The people are very much motivated for getting good marks. So tuitions लगे रहते हैं और because of all these reasons, the exercise has come down drastically. And not only that, even the lifestyle has changed. Especially in the urban settings, the fast food का जो है, तो because both parents will be working, so the घर में भी cooking के लिए time नहीं मिलता है, तो फास्ट फूड और बाहर का खाना ज्यादा हो जाता है. So that is one of the major reason why children are becoming more and more obese. And in fact, now some of the studies have shown that up to 40% of the school going children are in the overweight or obesity side. So it's a problem जो है सर. So major thing, so the metabolic complications जो है ये बहुत जल्दी आ जाएंगे. So during my MBBS and MD time, majority of the new onset diabetes were in the range of after 40s. Now what we are seeing, majority are in the range of between 25 to 35. That is one biggest alarming trend. तो ये अभी ऐसे ही जाएंगे तो another 10-15 years down the line, majority of the new onset diabetes will be between 20 to 25. So then they have to live with diabetes for the next 30 or 40 years with all the complications. So this is one of the biggest problem what we are going to face in the future. And दूसरा है जैसे आपने बताया, so all the because of the obesity, all the musculoskeletal problems will come up. Because there will be pains, vitamin D deficiency will be more, the joint pains will be more. They will not be able to do exercise because of that, and this obesity will go on increasing.
So these are all the problems we are going to face, sir. तो पॉइंट वेल टेकन एंड डॉक्टर क्षितिज ने भी पूछा था, वो बिल्कुल जायज क्वेश्चन था. चाइल्डहुड ओबेसिटी इज रियली वरिंग द वे डॉक्टर गणेश सेज, एंड ये सारा जो एपिडेमिक आ रहा है डायबिटीज का, ओबेसिटी का, हार्ट डिजीज का, ये सब और जल्दी जल्दी आता जाएगा. सो वी एक्चुअली नीड टू एक्ट. Vinod Kumarji, Sanjay Taneja is a leading industrialist from Karnal, and Lalit Kathuria Sahab is a leading businessman from Sonipat. Both are from Haryana. Both Yes, greeting you. And Tisha Bisht ji पूछती हैं, मैडम का क्वेश्चन जायज है. So her question is it true that? So the answer should be yes or no, or maybe in between. Is it true that gaining and losing weight is all about calories in and calories out? No, sir, it's not that Not so simple simple. actually. It's very difficult. I think the more and more we study, that becomes more and more complicated. Initially, I thought like that only. If you, I was giving the example of bank balance to my patients. If you go on putting in and don't take it out, the balance will go on increasing. But it was not that simple, because many people, if they're like, for example, I can quote my example only. I am a very lean person because my parents were also lean, and my most family members are lean. So in my case, probably even if I don't do exercise, I don't put on much weight, but it is not the same for everybody. So genetic factors also play a major role in determining obesity. But in addition to that, environmental factors, calorie in, calorie out, that also matters, but that is not the only thing. So it is actually quite complex, and we need to keep on working on it. क्योंकि ओबेसिटी कॉम्प्लेक्स है, तो हमें अलग अलग तरह के इलाज भी चाहिए. सो इट्स जैसे मान लो किसी को लेटर से आयरन की कमी हो, तो आप आयरन दे दोगे. अगर आप टॉपिक लेते हैं खून की कमी, तो खून की कमी तो मल्टीपल विटामिन से हो सकती है, मल्टीपल कारणों से हो सकती है. किसी को ब्लीडिंग हो रही है, किसी का खून नहीं बन रहा, किसी में खाने पीने की कमी है. सो यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन, एंड ओबेसिटी इज एक्चुअली अ बिट टफर देन other diseases, even finding the reason and therefore treating. But Rajvinder Kalsi ji, madam, is a regular listener in our program, and she says, आपने बोला that obesity causes mood disorder. तो मैडम का उल्टा क्वेश्चन है, पलटवार है, which is, I mean, very scientific question. Depression, anxiety, and schizophrenia, bipolar disorder, do these cause obesity? Yes, sir. Absolutely. Very, very valid question. And all these mood disorders definitely can lead to obesity. The major reason, some people who are in depression, they go on eating. So the eating, it will be a solace for them. And even with anxiety, there will be more of food intake that can lead to weight gain. And one more thing, the antidepressants which we use, that also can lead to weight gain. So because majority of the antidepressants are found to produce some amount of weight gain. So depression per se, or the antidepressants we use, or the schizophrenia and the medications used for that, all can lead to weight gain. सो रजविंदर जी, जो साइकेट्री वाली बीमारियां हैं, उनसे भी ओबेसिटी होती है, और कई बार उनकी दवाइयों से भी, जो एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक हम इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी ओबेसिटी होती है. दैट डजंट मीन वी शुडंट टेक देम. वी शुड जस्ट बी मोर केयरफुल अबाउट वेट गेन, वेट लॉस. लॉट्स ऑफ अदर क्वेश्चंस कमिंग इन, एंड अदुपमा जी का क्वेश्चन लेते हैं. 73 kg वेट, हाइट 5 feet 1 inch, which is 152 centimeters. तो ओबेसिटी तो है certainly. I tried a lot, me too, Anupma, but no success. Up and down होता रहता है मेरा. My metabolic rate is slow. This is what she says. So, Dr. Ganesh, would you want to suggest a few common tests that Anupma ji should get done to find out why Yes, her sir. metabolic rate is slow? Yes, sir. Well, the first thing will be, we have to do one thyroid function to find out whether frankly hypothyroidism है कि नहीं. लेकिन सब या उसके साथ में फास्टिंग शुगर, लिपिड प्रोफाइल, और लिवर फैट के लिए SGOT, SGPT इतना करना चाहिए. अगर उसके साथ में अगर बाकी कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद ही करना पड़ेगा, तो इतना तो मिनिमम कर सकते हैं. लेकिन एक प्रॉब्लम इधर मैं बताना चाहूंगा कि थायराइड का, अगर ये फ्रैंकली हाइपोथायराइड है, TSH 100 से ज्यादा है, 50 से ज्यादा है, ऐसा है, तो ही उससे वेट गेन होता है. सो बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, TSH बॉर्डर लाइन जो आ जाता है, सो 8, 7, 8, 9 ऐसे, तो बॉर्डर लाइन जो TSH इलेवेशन है, वो हाइपोथायराइडिज्म ओबिसिटी से ही होता है. मतलब उल्टा नहीं, हाइपोथायराइडिज्म से उल्टा ओबिसिटी नहीं होता है. लेकिन हाइपोथायराइडिज्म बिकॉज एक लेप्टिन का नाम का एक हार्मोन ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से TSH बढ़ सकता है. तो इसलिए वी हैव टू, व्हेनेवर वी आर आस्किंग फॉर TSH,
we have to use with the logic only. So we should not just because TSH is borderline elevated, we should not tell that the weight gain is due to hypothyroidism. तो आपके लिए तो वजन के लिए एक्चुअली तो डाइट और एक्सरसाइज जो है कंटिन्यू करना चाहिए. तो एज इट इज वेरी वेल नोन फैक्ट, so it's not easy to lose weight. And sometimes even if you're not losing weight, you have to be happy that you're not gaining weight. Whenever you are doing diet and exercise with that, if you are not losing weight, it's fine, but at least you will not be gaining weight. ऐसे सोचना चाहिए. So if you keep on trying, and ये हमने अपनी इंडियन फिलोसफी से सीखा, the right action with the right intention in the right direction. एक तो ये तीन चीजें हो गई. So the right action would be the correct food, the correct exercise. In the right, with the right intention, भी आप करना क्या चाहते हैं? Don't think that you want to just achieve weight loss. उसके परे क्या है? Beyond weight loss is better health. तो intention is better health. Weight और BMI is just a separate number. उस पे ज्यादा फोकस ना करें. In the right direction. Direction means good food doesn't mean ke good food means you go to the hotel every day and eat 20 idlis with lots of ghee on it. So this is one part. The right action with the right intention in the right direction. And now look at the caveat. Without any expectation for outcomes. This is our traditional philosophy. ये Indian philosophy है. आप आउटकम की चिंता ना करें, आप अपने कर्म की चिंता करें. द कर्म इज व्हाट इज इन योर हैंड. चाहे वो राजविंदर जी हों या सरोज मैडम या पूजा जी या मैं. पूजा जी भी डाइट एक्सरसाइज की बात कर रही हैं, तो ये हमारे कर्म हैं, डॉक्टर गणेश के भी और मेरे भी. वी शुड फॉलो द सात्विक डाइट एंड एक्सरसाइज. Even Rajsik, too much of exercise, too much of dieting will also be bad. We'll speak about that. And if you just forget about the outcome, you will actually reach there. So don't get too much stressed about the number. बट मनीषा शर्मा जी को एक डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस है, डॉक्टर गणेश. सो मैडम कहती हैं कि यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट पीपल हु आर लो वेट. जायज है, बट मैडम हैज अ जेन्युइन प्रॉब्लम. शर्मा साहब इज अंडर वेट because he was diagnosed with undifferentiated CTD, connective tissue disorder. Okay. He is taking good vegetarian diet. Now see the caveat here, जो मैडम मनीषा कह रही हैं, that Mr. Sharma is taking good protein vegetarian diet and he is not gaining weight. Doctor is saying that it is unexplained. What should we do? तो एक तो मैडम कह रही हैं do a program for us, so certainly we will do that on weight optimization. That's one. But secondly, Doctor Saab, can you pick on this thing that madam has said, good protein vegetarian diet? Would that be the best way of increasing weight? Actually, sir, the protein actually ज़्यादा है तो that will not produce weight gain. वेट गेन होने के लिए एक्चुअली कार्ब्स का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होना मांगता है. तो आई थिंक इफ ही इज टू मच अंडर वेट देन वी हैव टू थिंक अबाउट इट. बट एक्चुअली थोड़ा वेट थोड़ा कम है तो शुड नॉट प्रोड्यूस मच ऑफ कंसर्न. तो अगर वो वेट अगर रियली ज़्यादा होना चाहते हैं तो आई थिंक प्रोबेबली शी हैज टू इंक्रीज द कार्बोहाइड्रेट क्वांटिटी अ बिट. तो अगर सिर्फ प्रोटीन ज़्यादा करेंगे तो दैट विल बी गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ, बट इट विल नॉट प्रोड्यूस वेट गेन. एंड एज सर डॉक्टर राइटली मेंशनिंग देयर इफ अपेटाइट अच्छा है तो अगर खाना अच्छा खा रहे हैं तो देयर शुड नॉट बी एनी रीजन व्हाई ही इज नॉट डेवलपिंग पुटिंग ऑन वेट. तो हमारा सबका प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा खाएंगे तो ज्यादा वेट पुट ऑन हो जाता है. तो मैडम वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न, एंड मतलब कंसर्न जायज भी है. वी अंडरस्टैंड योर कंसर्न, वी अंडरस्टैंड योर कंप्लेंट. तो एक तो ये है कि लेट अस नॉट गेट टू मच फिक्सेटेड अबाउट द वेट और द बॉडी मास इंडेक्स. लेट अस थिंक अबाउट बेटर हेल्थ. तो ओवरऑल अगर शर्मा साहब हेल्दी हैं, ही इज फंक्शनल, सारे काम कर रहे हैं लाइफ के, तो बहुत बढ़िया. दूसरा, अगर वेट बढ़ाना ही है इन अ वेजिटेरियन डाइट, इट विल बी द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट्स विच विल हेल्प अस मोर. तो प्रोवाइडेड के शर्मा साहब को डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, तो थोड़ा सा घी मक्खन मलाई बढ़ाएं और थोड़ा सा चपाती परांठे इडली डोसा ये चीजें बढ़ाएं. द सीरियल्स एंड द फैट्स, दीज शुड सही बी है इंक्रीज. सर को काजू खिलाएं, सर. that is cashew nuts. Okay. And more fruits also we can give. तनवीर कपूर जी एक क्वेश्चन पूछ रही हैं, सर लेमन विद वाटर, will this help in burning fat or losing weight? No, sir. Actually, many of my patients are also coming and telling that they early morning they drink lemon and water or lemon with honey something. So, but there is no evidence to tell that it has produced some weight gain. But as far as I know, we don't have any evidence for that, sir. Sir, you can if you have any, sir.
I If don't you have. like it, keep on taking it. मतलब नुकसान कोई नहीं होगा unless you are a patient who is taking a thyroid tablet, or you are a person with diabetes who is taking semaglutide tablet. Then too much of water will prevent your tablet from being absorbed properly. तो बहुत ज्यादा पानी ना पिएं if you are on semaglutide or on thyroxine. Otherwise, go ahead and it might give a feeling of satiety, a feeling of well-being. बहुत सारे लोग मेथी वाला पानी पीते हैं, that is fenugreek and water. Yes, sir. कुछ लोग धनिया और पानी पीते हैं, धनिया is coriander water. So dhania, methi, lemon, honey, all these will reduce the absorption of thyroxine. They will reduce the absorption of Semaglutide. semaglutide. And they also might, we are not sure, मान लो आप गैस की भी दवाई ले रहे हैं, तेजाब की भी, और साथ में पानी खूब सारे ले रहे हैं, वो भी हो सकता है हजम ना हो. Naval Sharma Sahab thanking you, and also Vinny Joglekar ji saying that antioxidants and unsaturated fat, PUFA, MUFA, are good for many of these conditions. चंद्रकांत देशमुख साहब पूछ रहे हैं वेरी वाइड क्वेश्चन. तो चंद्रकांत जी, विनी जोगलेकर जी इज आल्सो आंसरिंग दिस क्वेश्चन फॉर यू. ओमेगा 3 एसिड्स आप ले सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड. तो फिश, वॉलनट, एवोकेडो, दीज आर गुड सोर्सेस. She also mentions that many people lose confidence when they have obesity. And Rajvinder ji पूछ रही हैं, can obese people donate blood or not? Yes, sir. So there is no problem in donating blood for in obese people. Definitely, they can donate. Every 3 months, they can donate 350 ml of blood. And Vinny Joglekar ji points out we were using the words visceral obesity, central obesity, hidden obesity, and another word for this is thin fat obesity and normal weight obesity. So all describing the same thing. Madam Pratibha has a question. SGLT2 inhibitors, what are they? They are indicated for use in diabetes, that I know. They are also indicated for use in non-diabetics to prevent kidney disease, to prevent heart disease, heart failure. But can I use them for weight loss specifically? यस सर. एसजीएल इनहिबिटर्स जो है नया क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो डायबिटीज के लिए प्रिडोमिनेटली डायबिटीज पेशेंट्स में यूज होता है. तो इसमें क्या है, ये जो ड्रग्स जो हैं जो किडनी से ग्लूकोज को, अपना शुगर को वापस लेना, ब्लड स्ट्रीम को लेना अलाउ नहीं करता है. तो इसलिए क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज, अगर खून में ग्लूकोज रुकता नहीं है, वो पेशाब में बाहर जाता है. इसकी वजह से जो डायबिटिक्स पेशेंट्स हैं जिनमें शुगर ज्यादा रहता है, तो यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा जाता है और शरीर में रुकता नहीं है, इसलिए वेट लॉस हो जाता है. लेकिन अगर नॉन डायबिटिक्स की बात करें तो उनमें ज्यादा खून में ग्लूकोज नहीं रहता है, तो यूरिन में ग्लूकोज ज्यादा जाएगा नहीं. इसलिए नॉन डायबिटिक्स में एसजीएलटी इनहिबिटर्स का ज्यादा रोल नहीं है वेट लॉस होने में. तो इसलिए नॉन डायबिटिक्स में किडनी प्रॉब्लम रोकने के लिए या हार्ट फेलियर रोकने के लिए एसजीएलटी इनहिबिटर्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन वजन के लिए इतना यूज नहीं होएगा. And the approved drugs are orlistat in India, liraglutide and semaglutide, which we use for diabetes in India. But liraglutide and semaglutide are approved for obesity in other countries in the West. So these are the 3 drugs that are available across the world, which are safe to use. कुछ एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ. नवल शर्मा जी पूछ रहे थे जीरा, मेथी, सौफ with water. तो if you like it, go ahead. It will increase satiety. भूख कम लगेगी सुबह आपको. परोंठे खाने का दिल कम करेगा. But please avoid if you are taking thyroxine or semaglutide or any other tablets early morning. सीमा जी कलकत्ता से हैं, डॉक्टर गणेश, a very strong advocate for healthy eating, for mindful eating. Yes, And sir. she says she has a suggestion for Manisha ji and for Sharma Sahab, and I fully agree with her. Chana, khajur and banana to gain weight, all vegetarian. Okay. Lemon and honey are good, but you should take them in cool water. If you take the lemon or honey in hot water, then all the good things, they just get destroyed in the heat. मनीषा जी के हस्बैंड को अगर फटीग है तो 2 टेस्ट आई कैन रेकमेंड, बट ऑफ कोर्स यू मस्ट बी शोइंग अ रूमेटोलॉजिस्ट मैडम. तो आप उनका कहना मानना. बट एक टेस्ट होगा टेस्टोस्टेरोन और एक होगा DHEAS, डिहाइड्रोएपी एंडोस्टेरोन सल्फेट. ये हो सकता है कम हो अनडिफरेंशिएटेड सीटीडी में, एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो सकती है. एंड यू शुड आल्सो लुक फॉर ऑटोइम्यून कॉजेस, बट आई एम श्योर योर रूमेटोलॉजिस्ट वुड ऑलरेडी हैव डन दैट. ऑटोइम्यून थायराइड, ऑटोइम्यून एड्रेनल हो सकता है ना नापा हो. तो DHEAS, सोडियम पोटेशियम, ये आसान से तरीके हैं चेक करने के लिए फॉर इजी फटीगेबिलिटी. निशी बालाजी मैडम पूछ रही हैं सर आपसे एज एंड ओबेसिटी, एंड डॉक्टर नरेश दलाल सर पूछ रहे हैं डायबिटीज एंड ओबेसिटी, इज देयर अ लिंक और नॉट?
यस सर। एज विद उम्र के साथ वजन बढ़ ही जाता है एक्चुअली द बिकॉज वन ऑफ द रीजन इज व्हेन वी आर चिल्ड्रन वी यूजुअली डोंट सिट इन वन प्लेस. So usually if we take a 1 year old sorry 2 3 year old children, they never sit, they just run, they keep running around. So that is the reason, very for them it's very difficult to gain weight. They will be maintaining constant weight unless they sit and watch mobile as it's happening now. सो एज उम्र बढ़ता जाता है तो अपना एक्टिविटी अननोइंगली थोड़ा कम होता जाता है, अपन थोड़ा ज्यादा बैठना चालू करते हैं. सो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन पीपल पुट ऑन ओबेसिटी एज दे ग्रो ओल्डर. और दूसरी वजह है तो मेटाबॉलिक बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 25 or 30 दैट यूजुअली comes down a bit. So that is the reason after the age of 30 we actually, if we are not doing a very strict strenuous exercise और हेवी वर्कर मैनुअल वर्कर नहीं है, मैनुअल लेबर नहीं है, तो वी हैव टू reduce our food intake a bit. Otherwise after the age of 30 or 35 the chance of gaining weight is more. तीसरा है पोस्ट मेनोपॉजल. मेनोपॉज के बाद भी वेट बढ़ने का चांस रहता है, इसलिए आफ्टर दैट ऑल्सो प्रोबेबली either they will have to increase a bit of exercise और थोड़ा खाना कम करना अच्छा रहेगा. एंड सेकेंड क्वेश्चन था डायबिटीज एंड ओबिसिटी. तो ओबिसिटी से डायबिटीज होता है. सो ओबिसिटी से डायबिटीज इज वेरी कॉमन. सो बिकॉज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर टाइप 2 डायबिटीज इज इंसुलिन रेसिस्टेंस और ओबिसिटी. तो ओबीस लोगों में डायबिटीज होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है. और दूसरा डायबिटीज की वजह से ओबिसिटी, सो दैट कैन हैपन ओनली व्हेन लाइक बिकॉज ऑफ द हाइपोग्लाइसीमिया. अगर बीच बीच में शुगर कम होता है उसकी वजह से लोग ज्यादा खाना चालू करते हैं, उसकी वजह से वेट गेन हो सकता है. नहीं है तो यूजुअली सम ऑफ द ड्रग्स लाइक पायोग्लिटोजोन जो डायबिटीज में यूज करते हैं उनमें से, और थोड़ा इंसुलिन में से भी थोड़ा वेट गेन हो सकता है. अदरवाइज यूजुअली द अदर वे अराउंड, ओबिसिटी लीड्स टू डायबिटीज. तो डायबिटीज चालू होते वक्त व्हेन द पीपल आर गेटिंग डायबिटीज एट द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज, उस समय वजन लॉस हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, बिकॉज व्हेन द शुगर्स आर वेरी हाई बिकॉज ऑफ द ग्लाइकोसूरिया देयर विल बी वेट लॉस. So obesity comes first usually, but it can be both ways. जैसे डिप्रेशन का भी राजवेंद्र जी ने कहा था. विनीत जोगलेकर जी shares 4 good points for increasing basal metabolic rate: protein rich diet, fiber rich diet, and good hydration, enough water, and also exercise. And Seema ji has 10 golden rules for weight loss. So Anupma Vishkarma ji and Dr. Ganesh and I, we are all waiting, Seema ji, for you to share them. So 10 golden Yes, sir. rules, and if you can share them in the chat box, we will be happy to read out. देशमुख साहब बोलते हैं कि electronic gadgets have a role in obesity, and I think that is, sadly, that is true. Absolutely, sir. Yeah. So majority of our children or childhood obesity is due to the gadgets only. The physical activity और जो बच्चे जो खेलते थे, जो भी खेलता वो सब गायब हो रहे हैं. That is because of they are doing video games now instead of playing outside. So gadgets play a major role in obesity. Different types of complaints coming. दीपक बाजपेयी जी बोलते हैं I am 8 kg overweight. कशिश त्यागी राज बोलते हैं जी I am underweight. Height is 5 feet 5 inches. Weight is 50 kg. But if it is an active body, then is Kashish sick? Yeah, is he exceptionally healthy? नहीं Dr. एक्चुअली Ganesh. अगर यस सर, अगर इफ इज फाइन डूइंग वेल, अगर उसके इनका बॉडी इमेज उनको चेंज करना चाहिए. ही शुड नॉट फील बैड दैट ही इज अंडरवेट. in fact he should be happy that he is not gaining weight. Yeah. Agar if he is healthy. Another point coming from Dr. Sanjeev Puri from Punjab. So, Yes, first of all, what label should we give him, if at all? Weight is 71 kg, height is 170 centimeters. Right? 170 centimeter. Okay. So, BMI coming at 24.8. So, Yeah, we can call him normal, sir. No problem. So actually, according to the Indian standards, Indian guidelines, now we can call him a little overweight side because they say 23 to 25 overweight, but we can call him normal also, sir. More than less than by 25. by Punjabi standard, Sanjeev तो बिल्कुल ठीक हो, तगड़े हो, सोने हो, तंदुरुस्त हो. And he's 44. So calories, I think, Sanjeev, honestly, you keep on doing what you are doing. मतलब मैं तो यही कहूँगा, don't change. Yes, If sir. at all you want to change, you increase the protein. चपाती चावल थोड़ा सा कम कर दो with each meal. चपाती चावल परांठे you reduce by 20-25%. That is easy to count, easy to do. But don't go hungry. You increase your dal,
sabji, dahi, you increase that by 25% as well. तो जो हमारी प्लेट होती है, अगर आप इंडियन थाली देखेंगे तो इतनी सारी जगह होती है चावल चपाती के लिए, और छोटी छोटी कटोरियां होती हैं साइड पे. हाउ डिड दिस स्टार्ट? ये शुरू हुआ 4,000 5,000 साल पहले. तब बिजली नहीं होती थी, फ्रिज नहीं होते थे, तो यू कुड हार्वेस्ट राइस एंड व्हीट एंड यू कुड कीप इट फॉर 6 months or a year. So we had more of those, but you could not store or you could not preserve fruits and vegetables for such a long time. So that is why we used less of those. दही की भी बात करें या दूध की, you would milk the cow every day in the morning, but there was no refrigerator, and maybe firewood also would come at a premium. I'm not sure, but how long could you keep that milk? It would spoil. So they learned how to convert it into ghee, clarified butter, because that could last for a longer period of time. तो तब के लिए ये चीजें ठीक थी, but today we have electricity and refrigerator, so it doesn't make sense to follow those rules. दूसरा, अगर आप कॉस्ट देखें तो डॉक्टर गणेश, इन मैंगलोर, what is the cost of rice or wheat per kg roughly? Roughly, sir, around 50 rupees. A kg, and Yeah. that does fine. But if you Yes. want to go out and buy chicken or meat, or you want to go out and buy dal, then Yes, the sir. cost is 10 times more. More. Yeah, correct. तो यदि फाइनेंशियल इशू है, then the housewife will focus on cereal rich food. She will try to give filling things, and potatoes are also cheap, onions are cheap. But if finance is not an issue, we should change those thalis, and we should have bigger katoris on the side or in the center, and the chapati and chawal, that should be reduced. The idli dosa should come down. The sambar should increase. Yes, sir. And if you do that, Deepak, then the belly fat will come down. Rohi ji question पूछती हैं, when we start losing fat, from which part of the body the fat is lost first? I think the face. That is why I look so thin on Yes, sir. Facebook and YouTube. Belly fat is the last to go, sir. Actually, Last. that. Belly fat is the last. Vinny points out that sleep plays an important role, so sleep hygiene is important also. And actually, one of our programs next week will be on sleep hygiene and how to use newer non-addictive drugs for sleep. So this will be with Dr. Sandeep Suri from Hisar. So thanks, Vinny, for pointing this out. And Seema ji is right. Don't focus so much on weight loss. Actually, focus on fat loss, because it is the fat which is causing all the metabolic disturbance. And work from home. Vinay Gupta ji कहते हैं कि I am working from home, so during each break I go to the kitchen and keep on searching for things to eat. So धीरे धीरे it keeps on accumulating in the tummy. Yes, sir. That is one of the major reason why people have put on weight, sir. That totally correct. Seema ji points out that some of the slow poisons we are feeding our kids are sauces and mayonnaise. So you can keep the main dish the same, but you just reduce the amount of mayonnaise or ketchup, and that will reduce calories, it will reduce salt, it will give overall better health. And ये point Seema ji raise कर रही हैं, how do we handle this? When my children take healthy food to school, they get bullied because of the healthy food that they have in their tiffin. So how do we handle that? Yes, sir. I think that's a difficult scenario because majority of the children or parents, it's very difficult for them to cook the healthy food. That's why whatever the already prepared fast food or that will be given, or chips or something like that, which is not good. So probably we have to tell the we have to go to the school level, and at the level of school we have to give education telling that how to improve the nutritional aspect of children. School level, if we give the talk, we educate the teachers, that will be helpful, sir. Otherwise, the bullying by the children will continue. I watched a movie recently, Ujda Chaman. So Ujda Chaman, Ganesh, is about a young man. His name is Chaman Kohli, and he happens to be bald, just the way I am. So Ujda would mean desolate, and Chaman would mean, I think, dunya or something. So Okay. Ujda Chaman means desolate garden. Let's put it that way. The desolate garden is his head, where there is no hair growing. So he gets bullied by his students, but then finally he realizes in the movie that people who are calling him bald, they are right. They are not telling a lie. It's about how he responds to the baldness. So we improve our self-esteem, our self-ego. Don't become Correct, sir. egoistic or ghamandi. Just improve your self-esteem and then let people say. So if somebody says to Master Langu कि आप घास फूस खा रहे हो, you are eating rice,
you're eating vegetables. The answer is yes, मुझे अच्छी लगती हैं. I like them. Absolutely, yeah. Somebody says, I It's am a eating great. pizza. Pizza has got maybe a white color and an orange color, a red color of the ketchup. And our plate is so colorful, then you say, yes, I am a patriotic Indian. I like my flag. My flag has got 4 colors. देखो मेरे टिफिन बॉक्स में भी 4 रंग है. So I am a patriotic Indian. और तुम कौन सी कंट्री हो तुम जानो. I mean, you go and figure out what Yes, country sir. flag your tiffin looks like. So these are simple ways of answering back. Yes, sir. But first thing is to accept what the person is saying. Don't chido mat. Don't get upset. Otherwise, they will bully you even more. So first you Correct. acknowledge, you accept, you say, yeah, you are right. I have no issue with that. Kar lo. So I don't bother what you are carrying in your tiffin. Why do you bother what you are carrying in what I am carrying in my tiffin? Maybe you are hungry. If you want, take some from me. मैं अपनी मम्मा को बोलूंगा अगली बार 2 बना के भेजना. So A that's the very way. good idea, sir. Actually, good. Very good, sir. So we just go on the offensive. Dr. Ganesh, it is nearly 8 and there are so many comments. We will not be able to take them. ये तो obesity से भी ज़्यादा. अरे उजला. Okay, Ujjala Chaman, hair fall. We will get one of our dermatology friends to talk about hair fall. Yeah. And yeah, मैं weight कम करने की कोशिश कर रहा हूँ मंजुला जी, but सिर्फ face वाला ही जाता है, बाकी नहीं जाता. Okay. So for Mr. Sharma, if Manisha madam, if you allow, we will try to get a rheumatologist. I have tried in the past, but we'll try to get a rheumatology expert to answer your questions on weight loss with CTD. सीमा जी के क्वेश्चंस देखते हैं. निबलिंग नहीं करना, माइंड नाइट मिडनाइट ईटिंग तो अवॉइड करना चाहिए. यू टेक इट लाइक अ व्रत, ब्रिंग रिलीजन इनटू इट, यू नो, कि सेल्फ डिसिप्लिन, मैं रात को नहीं लूंगा. मिलेट्स आर बजट फ्रेंडली प्रोटीन, राइट. बजट फ्रेंडली प्रोटीन का वेरी गुड आइडिया इज सत्तू का शरबत. सत्तू का शरबत इज अ नॉर्थ इंडियन डेलिकेसी एंड सत्तू की रोटी आल्सो यू कैन टेक. What is It's sattu, sir, actually? sattu is ground. Let me find the exact English for you. It is Okay. ground uh, gram. Okay. But Okay. let Okay. me find the exact English and tell so that we don't get confused. It's a good drink to have in summer also. Okay, sir. Okay. And the English is ground roasted gram flour. Okay. 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 So Okay. chana, Bengal gram flour or gram flour, you just roast it. Let me also talk about a difference which we are seeing with our younger patients now. Chane ka atta means chana with the chilka, with the cover, with the husk. That is Correct. chane ka atta. Besan means chane ka atta without the husk, without the fiber. So many people confuse that. And you will see chane ka atta will have a blackish or a brownish color, and the besan will be yellow because they've taken out all the husk. If you take besan or you take a food like kadhi, your sugars are going to spike like this. They will not stop below 500. But if you're taking chane ka atta, ya bhuna chana, that is roasted chana, or sattu, which is the ground bhuna chana, then you will find that your glucose level will come down. And I know this because my brother and bhabhi live in Hyderabad, and Okay. they struggled initially to find chane ka atta. They were getting besan everywhere, but they were not getting chane ka atta in their local shops. So that difference we should be aware of. Okay, sir. And yeah, thank you, Nepal. Manas Thapa from Kathmandu has helped us out. Sattu is roasted ground flour of different cereals and pulses. So Okay. thank you Okay. for correcting us also. And Devinder Bhukal says it is roasted barley. So basically, you can use any roasted grain, you can grind it, Okay. and you can make a drink out of that. Okay, sir. Okay. And God bless Vinay Gupta ji because he says 2 types of sattu: jo ka sattu, that is barley, and chane ka sattu, which is chana. And Manas Thapa, Manas is from Nepal. So they say it gives more protein and helps in reducing calorie intake. It increases Okay. satiety. Okay, sir. Thank you, Manas. Thank you, Vinayji. And Naval Sharma ne bhi, Chandrika, another word for it. पीस कर बनाया जाता है. गुड़ के साथ भी ले सकते हैं. Only गुड़ Okay. sugar वाले ना लें, please. But to add taste, you can add a little bit of sugar. And Devinder ji and Seema ji, everybody, thank you for helping us out. Selvi Ganesh, we have learned at least one new Yes, thing sir. today. Yes, sir. From Yes, sir. So that is the best thing about KK Med Talks as well. Pramod Agarwal ji is speaking about gut microbiota. Agarwal Saab, if you allow us, let us take that topic later on next time.
And Vinny Joklekar ji says, okay, this is for children who go to school. So you can make a rule, maybe noodles on Tuesday or something, just one day in a week, and the rest of the week, healthy food. The Ujrachaman part is nice. So I don't feel lonely anymore. Mm. And let me find those rules. Okay. Dr. Utsav is a physician from Delhi, Okay, sir. practicing obesity and diabetes. He says, Daksa, from your point of view, healthy BMI, should we take it as 23 or 25? So 25, I think 25 is okay, but only thing we should not take only BMI. We have to look into the waist circumference or waist hip ratio also, because otherwise we'll be looking only at generalized obesity. If his BMI is 24.8, just as we are talking about, without central obesity, then it should be fine, sir. Actually, So, Dr. Utsav, ek to the number alone is not what we are treating. We are looking at the whole physician, the whole patient. So, look at the other numbers also. Neck circumference, trouser circumference, these are the easiest to look at. And also look at the ethnic background of the patient. That is also important. Okay, so now we get those 10 rules. Number one, complex carbohydrate ज़्यादा खाएं. Dr. Sahab, your opinion on this? I'll just read out the rules which Madam yes, is sharing. yes, sir. So complex carbohydrates are definitely good, sir. Actually, simple carbohydrates are very likely to produce weight gain, whereas complex carbohydrates, there are a lot of fibers also into that. So better to take complex carbohydrates. So आटा जब लें छिलका समेत, rice with Yes. husk, चना छिलका समेत with the husk. No refined sugar, Madam is saying. Yes, sir. That absolutely. As much as possible, we have to cut down the refined sugars quantity. Totally agree, sir. चीनी, गुड़, शक्कर, शहद, all are equally bad. All are equally bad. Even fruit juice is bad, especially if you are taking it in a tin or in a packet. But you can eat as much fruit as you want. That will also contain fiber. तीसरा है मैडम का no fried food at all. So what is the ghee doing? What is the oil doing? Yes, sir. Actually, as we know, the it gives 9 calories. One gram of fat gives 9 calories. So the calorie count will become very much high if we use ghee or fried items. But I think it's totally avoiding fried things is a little difficult for almost everybody. So minimize the fried food will be the Mantra. doable option. And she also specifically says, do not reuse oil in the kitchen. So what Absolutely, that is happens, Dr. Ganesh, if we keep on reusing oil again and again to fry things? What happens? so saturated fat quantity will increase, sir, which is very bad. Not only it will not only lead to increased obesity, but it will lot of oxidative stress on the body. So the saturated fats will become more, and the oxidative stress and cardiovascular disease chances are much higher. So that is the reason it's better not to eat fried things outside. And if we have to eat or if we feel like eating, better to fry at home only and not to reuse the oil. That will be the best thing, sir. So thank you, madam, for sharing these. Her next point is mindful eating. Yes, sir. That's I think, sir, that is one of the most important, and I like this point because whatever we are eating, we have to eat consciously, and we should not look at the WhatsApp or looking at the mobile and eating. So we won't be coming to know only what we are eating. That is one of the, and we should not watch TV while eating. So then, actually, subconsciously, we will be eating more. So this is one of the very important thing. We should be knowing what we are eating, and we should know when to stop also. And maybe mindful watching KK Med Talks as well. Because if you keep on eating while you are watching KK Med Talks, then you will end up eating more. Yeah. One other important point, last point she's sharing is no guilt of being overweight. What does this mean to you, sir? Yes, sir. Actually, there should not be much guilty feeling about overweight because every person is unique. That is the reason we are able to identify so many people in spite of having billions of people. So, because every person is unique, every person's face cut is different. So, similarly, the weight is different for different people. So, they should not be feeling guilty about it. But at the same time, if they are overweight, it's from the metabolic point of view, if they can cut weight, reduce weight, it will be better. And they should not feel guilty about it if you are not, even if they are not able to lose. But they should keep trying to lose weight. Follow a healthy lifestyle. And I think that is the take home that we Yes, are sir. getting from everybody. We acknowledge all the questions we've not been able to take, for example, regarding alcohol, regarding other things. And Manas Thapa says that you should reduce portion size as well. So reduce the size of your plates and katoris.
Agree, sir. Totally agree. So if we reduce the portion size by 50%, we will be able to reduce at least some amount of weight in majority of the people. Aman Sachdeva Sahab shares two dangerous P's: say no to packed foods and say no to processed foods. And that will help you have a healthier diet. Very valid Uh, point, sir. yeah. Now, there are some people from alternative medicine. Dr. Vipin ये point out कर रहे हैं. And people help you reduce 5 kg in 10 days. Usually that is water loss. It will not be fat loss. And you will find that in 10 kg you might lose 5 kg. With keto diet also you can lose. But वो सारा का सारा वापस आएगा and it will come back with compound interest. So it is not about losing weight. It is about losing weight in a sustainable and healthy manner. And like we said, gallstones हैं, for example. Gallstones will be increased in obese people, but even more so in people who are trying to lose weight very fast. So these kind of quick fix solutions should be avoided. अगर 100 मीटर की दौड़ दौड़नी हो तो आप अलग प्रिपरेशन करेंगे, अगर मैराथन दौड़नी हो तो अलग. And there is nothing that is going to replace a healthy lifestyle. Yes, sir. सब लोग जिन्होंने ज्वाइन किया उनको थैंक यू करते हैं. एंड आई रिमेंबर दैट वी कुड नॉट टेक वन एंडोक्राइन क्वेश्चन. दिस वाज फ्रॉम मिस्टर ललित कथोरिया. तो कथोरिया साहब पूछ रहे हैं व्हाट इज ब्राउन एडिपोज टिश्यू एंड Yes, sir. is it good, is it bad, how do we convert white fat into brown fat or vice versa? Yes, sir. Brown fat tissue is actually good, sir. Actually, it's actually compared to white adipose tissue, it's better metabolically. So by doing more exercise, physical activity, we can convert white into brown adipose tissue. But how to measure exactly the brown adipose tissue, that I am not sure. The in body, how to measure brown and how to measure white, to differentiate between the two, it's not easy. But I think other research settings are required for that. But the treatment will be exercise and Yes, sir. thermogenesis. That will Yes, be sir. the Yes, mainstay of treatment. yes, sir. Daksa, we'd like to thank you. So many comments and Thank you. appreciation coming in for you. Questions will never keep on ending because, like you yourself said, obesity is a never-ending story. And Anand Chaudhary ji is a student. To lose weight, you should start dieting first, Anand. And then gym versus daily exercise running, both are fine. But the focus should be dieting. The gym and exercise will help you prevent muscle loss. तो आनंद, जो वेट कम होगा वो डाइटिंग से कम होगा आपका. मगर अगर आप अकेले डाइटिंग करेंगे तो आपकी मसल्स भी वीक हो जाएंगी. तो मसल्स को बचाने के लिए आपको जिम या एक्सरसाइज या रनिंग कुछ भी करना है. सो दैट इज द लॉजिक, दैट इज हाउ वी फॉलो. डॉक्टर गणेश, वीड लाइक टू थैंक यू वेरी मच. सब लोगों की तरफ से थैंक यू करना चाहेंगे. बट बिफोर वी कंक्लूड, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रतीक, वुड यू प्लीज शो एन सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन फॉर डॉक्टर गणेश? And Thank you, thank sir. you. Thanks a And lot. secondly, Dr. Ganesh, everybody is listening to you. Your take-home message, Vinny ji ये भी जोड़ती हैं that dinner should be lighter than lunch. That's also right. Thanks, Vinny, for pointing this out. So, like I Yes. said, today we are blessed, Ganesh. We have all the people in the audience who are answering all the difficult questions. Sorry, so, so actually the most important thing is we have from the early life on life only we have to focus on healthy lifestyle. So regular physical activity and knowing our food, like mindful eating, that I liked actually, like that word, mindful eating from the early life, that will lead to like proper our weight and BMI, visceral fat, everything will be, we can minimize, so that we can have a long healthy life. So the probably the right amount of physical activity with the mindful eating, that will be the best to prevent obesity as well as to maintain healthy weight. With this message, I'd like to thank everybody for joining. जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके साथ रोज होते हैं के मेड टॉक्स पे शाम 7 बजे, और मैं आपके साथ होता हूँ सोमवार और वीरवार. आई एम विद यू एवरी मंडे एंड थर्सडे. आज का हमारा टॉपिक था ओबेसिटी, मिथ्स एंड फैक्ट्स, एंड वी हैव फोकस्ड एक्चुअली ऑन सो मेनी फैक्ट्स अबाउट ओबेसिटी. इस कॉन्वर्सेशन को भी जारी रखेंगे अगले महीने. मगर अगले हफ्ते जो हमारे गेस्ट होंगे 26 सितंबर को, दैट इज डॉक्टर सतबीर सिंह डागर. Dr. Satbir Singh Dagar is retired from the army and he's a sports medicine expert. He's an expert in sports medicine. तो जो हमारे एक्सरसाइज, रनिंग, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, डॉक्टर सतबीर से अगली बारी पूछेंगे. आज के लिए आपसे इजाजत मांगते हैं. सबको कहेंगे शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी. एंड डॉक्टर गणेश,
In Haryanvi, there is actually no word for thank you. So, Thank you, sir. yeah, thank you is in English. So we have shukriya, meherbani, dhanyavad in Urdu, Punjabi, and Hindi. What is the thank you in Tulu and in Kannada? Namaskara, sir. Namaskara. In both. Namaskara. Yes, sir. Both. In both. Namaskara. And it is similar in Telugu and in Malayalam as well. In Tulu, sir, in Namaskar. another word, I for Solmelu. Solmelu, sir. Solmelu. In Tulu. Tulu, yes, sir. And in Haryanvi, the closest that we come to thank you is Thara Bhala Ho. May good be unto you. Thara Yes, Bhala sir. Ho. May good be unto you. And with this, आप सबसे इजाजत लेंगे. थारा भला हो. जय हिंद. Jai Hind.